So very good morning everyone. In last videos we have discussed about constitution of IAC, how many members should be from the institute and how many members as a CPCSE nominated members will be in your IAC. As you all know, due to this pandemic situations arise due to Corona, and not only IAC meeting has been affected, but many meetings across the globe has been affected. This CPC guidelines have allowed it to conduct these IAC meeting through online mode or through a virtual mode. So during lockdowns, these meeting has been conducted through a virtual mode, and agenda of these meetings has been circulated through email, and it should be saved. And to get a proof whether the meeting has been conducted or not, a snapshot of online meetings can be taken or keep as a record. All the minutes of meeting can be circulated through email to all the members. Then they will put the sign and get back to you by the scan copy. Then another members will put a sign, and after that, member secretary will upload that minutes of meeting on the websites on the that portal of CPCSCA. So this is about the they have allowed it to conduct these meeting through a online mode during this lockdown. Um, another committee is there, that is we call institutional biosafety committee, and this committee is also constituted by the institutional, but few institute have this committee because this committee is required for a particular purpose, particularly if your institute or any investigator would like to work on genetically modified organisms, live microorganisms, hazardous microorganisms. Uh, in that case, you have to take approval from institutional biosafety committee, or your institute should have that institutional biosafety committee. So in that committee, the members are different as in the IAC. There are three or more scientists engaged in a DNA work or molecular biology, with then one outside expert in a relevant discipline, a member with a medical qualification, that the biosafety officer should be there. One member will be nominated by the DBT, not by the CPCSCA, and head of institutions. If head of institution is not available, then his or her nominee. So again, this institutional biosafety committee is required when we are working on genetically modified microorganisms, when you would like to give hazardous microorganisms to the animal. So in that case, you have to get a first approval from IBSC, then you put your protocol in IAC, then you will get a final approval. So this is about IBSC. So there are different forms used in the animal house facilities. What are these different forms? As we have discussed, Form A we are using for the registrations of animal house facility. Form B we have to use to, if you would like to conduct an experiment on animals, then you have to be fill the informations in the Form B. Form C is for record of animals, where you have to give how many animals you have purchased, how many you have used in your animal house facility. Form D is particularly record of animal acquired and experiment performed. Suppose the 60 animal has been approved to you, and out of 60, how many animals you have used for the experimental purpose, how many deaths has been happened. So all these information you have to be filled in a Form D, and this Form D is maintained by your investigators. And during after the when experiment is complete, then investigator has to submit the completion report to the member secretary of IAC. So along with the completion report, you have to be attached the Form D. Form E is applicable if your animal house facility have a trading facility, trading approval. So in that case, you have to be maintain a record of animals which you have sold. So these are the different forms of the animal house facilities. Uh, this is about maintenance of record of animal house facility. Which record you have to be maintained in your animal house facilities? See, every record you have to be maintained. You have to maintain layout of your animal house facilities in files, minutes of meeting of every meeting which has been conducted. You have to be maintain this record,
You have to maintain all the forms, completion report, CVs of the IAC member as well as the persons who are working in animal house facilities, health record of animal as well as the staff, both you have to be maintained. Water and feeding testing report every 6 months you have to be give the samples which sample of water which you are using in your animal house facilities or feed for the testing purpose. Humidity and temperatures on daily basis you have to be record and maintain that record in one file. Stock register you have to maintain, which will tell how many animals you have in your animal house facility, how many male, how many females, which strains are available. Mortality register you have to be maintained. Post-mortem you have to be maintained. Feed register you have to be maintained. Animal procurement, if your facility don't have a breeding or trading facilities, or your facility is purchasing the animal from other animal house facility, so you have to maintain all the bills, purchase orders. Animal disposable record you have to maintain, how many animals you have disposed on what date. Breeding record, if your animal house facility have a breeding facility, so you have to maintain this record. All the SOP, even how to enter in the animal house facility, you have to make SOP. How to do the washing of cages, how to do the sterilizations of your feed, your husk. So all these SOP you have to be display in your animal house facility. How to perform experiments. Logbook you have to be maintained in the entry. uh, Another file you have to maintain whatever the communications you have done with the CPCSCA, and daily diary of veterinary is required to check up the health status of the animals. Roster duty is also you have to be maintained. Roster duty means particularly on Saturday and Sunday, who is visiting your animal house facility, who is there in your animal house facility, particularly in holidays. So that roster duty you have to be made. So this is about maintenance records. Next video we will discuss about animal, some important points regarding animal experimentations. If I explain a little bit in Hindi, तो इस IAC मीटिंग आई थिंक सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से CPCSCA ने सबको मेंबर सेक्रेटरी को मेल भेजी कि भाई आप लोग, अगर आपके कोई प्रोटोकॉल्स हैं तो आप लोग अपनी ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हो। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने भी ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट की। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने इस पीरियड में ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट की। आप किसी भी, चाहे स्काइप यूज कर लो, टीम व्यूअर कर लो, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है उससे आप सारे मेंबर्स को कांटेक्ट करो। एजेंडा आपको मेल के थ्रू, पहले क्या है कि आपको एजेंडा ऑफ मीटिंग और फॉर्म भी सारी आपको हार्ड कॉपी सब मेंबर्स को भेजनी होती थी बाई पोस्ट, और ये लिखा है गाइडलाइन के 15 दिन पहले, मीटिंग के 15 दिन पहले आपको हार्ड कॉपी आपका एजेंडा ऑफ मीटिंग और आपके प्रोटोकॉल जो फॉर्म भी है वो आपको सब मेंबर्स को CPCSE के भेजनी होती है। पर अब कोरोना की वजह से आप नहीं भेज पाओगे हार्ड कॉपीज, तो आपको ये सर्कुलेट करनी है मेल के थ्रू पर 15 दिन पहले, और वो मेल आप सेव रख लो अपने रिकॉर्ड के लिए। ऑनलाइन मीटिंग का प्रूफ के लिए आप स्नैपशॉट लेके उसको रिकॉर्ड में रख सकते हो। मिनट्स ऑफ मीटिंग, जब आपकी मीटिंग खत्म हो गई तो आप जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो मेंबर सेक्रेटरी बनाएगा वो फिर मेल के थ्रू ही सब मेंबर्स के साइन ले लेगा, जो स्कैन करके उसको वापस भेज देंगे। और मेंबर सेक्रेटरी जो आपका IAC का है वो आपके CPCSE के ऑनलाइन पोर्टल में उस मिनट्स ऑफ मीटिंग को अपलोड कर देगा। तो ये प्रैक्टिस हुई है। ये एक और कमेटी है, इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी, ये भी इंस्टीट्यूट ही कंस्टिट्यूट करता है। बट इस कमेटी का स्पेसिफिक पर्पस है, ये आपके नॉर्मल एनिमल प्रोटोकॉल अगर आपको अप्रूव करवाने हैं आप IAC के थ्रू करवाओगे। पर अगर आप बोलते हो कि भाई हमारे पास पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब हम इसको एनिमल में इंजेक्ट करेंगे फिर देखेंगे, तो इन दैट केस आपकी इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी अगर उस प्रोटोकॉल को अप्रूव करती है तब आप IAC में उस प्रोटोकॉल को पुट अप करोगे। या आप पर्टिकुलरली अगर GMO पे काम कर रहे हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पे, या लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पे, या हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, तो उस केस में आपको इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी की अप्रूवल चाहिए। इस कमेटी में मेंबर्स अलग हैं, जो आपके IAC के हैं वो अलग हैं, ये अलग है। इसमें 3 और ज्यादा साइंटिस्ट आपके जो काम कर रहे हैं DNA पे या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं
वो होने चाहिए, एक आपका आउटसाइड एक्सपर्ट होना चाहिए उस रेलिवेंट फील्ड का, एक आपका मेंबर विद मेडिकल क्वालिफिकेशन जो कि आपका बायोसेफ्टी ऑफिसर होगा, एक मेंबर जो होगा वो नॉमिनेट करेगा आपका डीबीटी, और एक आपका हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, अगर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन अवेलेबल नहीं है तो उसका नॉमिनी, राइट। तो ये कमेटी स्पेसिफिक कमेटी है। अब ये जो फॉर्म्स जो हमने डिस्कस किया था कि आपने एनिमल हाउस बना लिया, सब कुछ तैयार कर लिया, तो आप फॉर्म ए भरोगे अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है एनिमल हाउस फैसिलिटी का। तो इस तरह के डिफरेंट फॉर्म है, ए बी सी डी। तो वो किस पर्पज के लिए हैं? फॉर्म ए जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए है। फॉर्म बी, अगर आप कोई भी एनिमल का प्रोटोकॉल और एनिमल्स पे काम करना चाहते हो तो आपको प्रोटोकॉल्स भर के फॉर्म बी में देना है। फॉर्म सी आपको फॉर्म सी आपके रिकॉर्ड ऑफ एनिमल्स जो आपके एनिमल हाउस में है उसका रिकॉर्ड रहेगा। फॉर्म डी आपका रिकॉर्ड ऑफ एनिमल जो कि आपने लिए, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को सपोज 100 एनिमल इशू हुए, सो 100 में से उसने कितने पे एक्सपेरिमेंट किया, क्या हुआ एक्सपेरिमेंट के दौरान, वो सारा फॉर्म डी में, कुछ मर गए, कुछ क्या हुआ, जो भी हुआ वो आप फॉर्म डी में मेंटेन रखेंगे और वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रखेगा। और जब आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टिगेटर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो होगा वो एक कंप्लीशन रिपोर्ट बनाएगा, उसके साथ फॉर्म डी लगा के मेंबर सेक्रेटरी जो एनिमल हाउस इंचार्ज हैं उनको सबमिट कर देगा। ठीक है। फॉर्म ई तब भरते हैं हम अगर आपकी एनिमल हाउस फैसिलिटी में आपको एनिमल्स बेचने की परमिशन है। अगर बेचने की परमिशन है तब आपको फॉर्म ई रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि कितने बेचे आपने एनिमल। ठीक है। फिर आपका ये आता है कि आप रिकॉर्ड क्या क्या मेंटेन करोगे, क्योंकि सारा रिकॉर्ड आपके इंस्पेक्शन में चेक होता है। तो ये सारी चीजें हैं, आप जो लेआउट है एनिमल हाउस का जो अप्रूव हुआ है सीपीसीएससी से वो रखना पड़ेगा। जो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग, जितनी मीटिंगें करवाई वो एक मिनट्स ऑफ मीटिंग का रिकॉर्ड रखिए, फॉर्म सारे रखिए, कंप्लीशन रिपोर्ट रखिए, सीवी आपकी आईएसी मेंबर्स के सीवी और जो एनिमल हाउस फैसिलिटी में काम कर रहे हैं उनके सीवी रखिए। हेल्थ रिकॉर्ड एनिमल का भी और स्टाफ का भी आपको रखना पड़ेगा। वाटर और फीड की टेस्टिंग रिपोर्ट 6 मंथ में आपको रखनी पड़ेगी, जो भी आप वाटर प्रोवाइड कर रहे हो या फीड प्रोवाइड कर रहे हो। ह्यूमिडिटी टेम्परेचर डेली आपको रिकॉर्ड करना है। तो आप मैंने बताया था कि एक डिजिटल रिकॉर्डर लगा होता है एनिमल हाउस फैसिलिटी में, आपको रीड करना है, उसमें आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड कीजिए डेली और उस रिकॉर्ड को रखिए। ठीक है। तो ये सारे स्टॉक रजिस्टर रखिए, मोर्टेलिटी, पोस्टमार्टम, फीड रजिस्टर रखिए, डिस्पोजेबल, ये सारे रिकॉर्ड आपको एनिमल हाउस में रखने पड़ेंगे। तो जब भी इंस्पेक्शन होगी तो इंस्पेक्टर या आपसे पूछ सकता है कि ओके आप अपनी लॉग बुक दिखाइए, या आप अपनी रोस्टर ड्यूटी का मतलब ये है कि जो एनिमल हाउस में जो काम कर रहे हैं तो वो सैटरडे संडे कौन आ रहा है, और जो आ रहा है उसको क्या मीन्स आगे आप छुट्टी दे रहे होंगे। तो सैटरडे ये ना हो कि संडे को सबकी छुट्टी हो जाए, तो आपको रोस्टर ड्यूटी एक मेंटेन रखनी पड़ेगी और उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि हाँ संडे को भी एनिमल्स की के देखभाल के लिए हमारे पास पर्सन है। तो ये सारे रिकॉर्ड आपको रखने हैं। तो दिस इज अबाउट एनिमल हाउस फैसिलिटी। तो आगे हम लेक्चर्स में कुछ एनिमल एक्सपेरिमेंटेशंस में जो कॉमन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।